हेलो, नमस्कार जी एंड वेलकम टू योर स्पोर्ट लाइन। ये प्रोग्राम है जो 10 साल के बाद आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 10 साल में तो बहुत चेंजेस हो गई है, सारी दुनिया से ऐसे लगता है जैसे चेंज हो गई है। इसीलिए हमने सोचा कि हम फिर से ये प्रोग्राम शुरू करते हैं ताकि हम आपकी सहायता कर सकें जहां हम कर सकते हैं इन फाइनेंशियल मैटर्स। सो हर एक हफ्ते हम डिफरेंट टॉपिक लेंगे। कभी हम करेंगे मॉर्गेज के बारे में बात, कभी करेंगे इंश्योरेंस के बारे में बात, कभी लीगल करेंगे, लीगल फीस एंड लीगल मैटर्स के बारे में बात, इमिग्रेशन, फिर बिजनेस के साथ क्या करना चाहिए या कैसे अच्छी इंश्योरेंस मिल सकती है, ये सब हमारे टॉपिक है। देखिए हमारी नीचे आपके हमारी ईमेल आईडी भी लिखी हुई है नीचे, और हमारा वेबसाइट भी है, और हमारा फ़ोन नंबर भी है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आंसर करें, आप हमें फ़ोन कीजिएगा 07534321945। अभी हमारे ऑपरेटर्स हैं फ़ोन पर। अगर फ़ोन की लाइन बिज़ी है तो आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, वो आपको ज़रूर फ़ोन वापस करेंगे। पर्सनली अगर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे बात करूँगा। तो अब हम अपना आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि हमको मालूम नहीं पड़ता कि क्या खाएं या क्या ना खाएं। मोर्गेज जो है वो इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर हो गया कि ऐसे लगता है कि जैसे हम 5 स्टार के लिए मोर्गेज दे रहे हैं। तो आज हमने सोचा ये पहला शो है, सो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए हमें बहुत लोगों की फोन कॉल आती रहती हैं कि मोर्गेज के साथ हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे अपनी मोर्गेज की इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं, या अगर हमको कोई नई मोर्गेज चाहिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमारे लिए एक हमारा मोर्गेज स्पेशलिस्ट है, उसका नाम है सरस। सरस हमारे साथ है। सरस, हाय। Hello there, सो Romi. सरस, सो मैं ना आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, सो प्लीज आंसर देम राइट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, ओके। एंड मैं पहले ये चाहता हूँ कि देखिए, you know, the climate is bad. I know the inflation rate went down today, लेकिन फिर भी, you know, the mortgage rates are very high. So, in your opinion, is it a good time to go and get a mortgage? You think the interest rates will come down? क्या है आपका opinion? Yes, of course. As of today, the inflation rates have actually gone down. And what's happening is many banks have plans to change their rates, and we are seeing that the rates are actually going down. We are seeing a number of increase of inquiries from all our clients who are looking to purchase their own properties or commercials, and we believe this is a great time to think about investing into property. सो अगर देखो तो यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई है जिनको घर चाहिए लेकिन उनकी इनकम लो है, या उनके पास कोई सीसीजे है कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन का बिल नहीं पे किया था, या छोटी सी एक बिल को पे करने के लिए भूल गए, तो वो क्या मोर्गेज ले सकते हैं? क्योंकि कोई हाई स्ट्रीट बैंक तो उनको कोई मोर्गेज नहीं देगा। कोई ऐसा है, ऐसा उपाय है कोई? इज देयर अ वे वेयर दे कैन गेट अ मोर्गेज? Yeah, so there are options available. Even if you have a CCJ or a default or a bankruptcy, we have lenders on our panel who can look into your circumstances, but it all depends on your rates and whatever rates they have available. There are lenders out there who understand you, who understand your circumstances. We will find you the best deal. So, you know, before I ask you another question, I just want to explain to our listeners. देखिए भाई साहब, सब लोग सोचते हैं कि सबकी क्रेडिट रेटिंग परफेक्ट है। मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी की क्रेडिट रेटिंग परफेक्ट नहीं है। हाँ, लोग हैं जिनके पास 999 की क्रेडिट रेटिंग है, लेकिन उनकी क्रेडिट रिपोर्ट भी कुछ ना कुछ लिखा होता है जो ठीक नहीं है। इसलिए आपको फिक्र मत करना चाहिए कि मेरी क्रेडिट रेटिंग क्या कहती है। देखिए बड़ी उधर ना, अगर आपको क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए तो ऑन द मार्केट प्लेस, ऑन द नेट, देयर आर मेनी कंपनी जो आप कहते हैं कि हमारे पास क्लिक करो, हम आपको आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देंगे। आपको सिर्फ 2 मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनीज हैं, चेक माय क्रेडिट फाइल एंड एक्सपीरियंस। ये दोनों के साथ जाना चाहिए टू चेक योर क्रेडिट रिपोर्ट, राइट। अगर आप मोर्गेज लेने के लिए सोच रहे हैं तो पहली चीज ये करनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं होती तो आप हमें फोन कीजिएगा, नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है,
07534321 और हम आपको बता देंगे कि आप कैसे अपनी क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सो कई लोगों के पास काउंटी कोर्ट जजमेंट्स हैं, कई लोगों के बैंक्रप्सी हो चुकी है, क्या है कि कई लोगों के पास इनकम ही नहीं है मोर्गेज करने के लिए, लेकिन वो है यूनिवर्सल क्रेडिट्स पर, लेकिन उनको एक हम्बल हाउस चाहिए, उनको मैंशन नहीं चाहिए। तो क्या सरस, इन योर ओपिनियन, इफ दे आर ऑन यूनिवर्सल क्रेडिट, वो कैन दैट बी यूज्ड टुवर्ड्स गेटिंग अ mortgage? Yes. So the lenders can accept universal credit, child benefit, child tax and working tax credits, and even carer's allowance if you are caring for somebody, PIP, and even your state pension as your income. However, there are some benefits they won't accept. So things like your DLA will not be agreed on. But if you give us a call to discuss this, we can elaborate a ये little bit ये more. डीएलए क्या है सरस, क्योंकि तुमने बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज किया, डीएलए क्या होता है? Disability living allowance. डिसेबिलिटी, अच्छा, तो अगर कहते हैं कि अगर आपका डिसेबिलिटी है वो नहीं यूज कर सकते, लेकिन उसके अलावा जो भी फैमिली इनकम है, अलाउंस जो भी मिलती है, वो सब कुछ यूज हो सकता है। ठीक बात है। Yeah. सो Yeah. सो ओके, सो क्या होता कि व्हाट हैपेंस कि मेरे पास अगर क्रेडिट कार्ड्स है जो मैंने यूज किए हुए हैं, राइट, कैन आई बारो ऑन द क्रेडिट कार्ड्स एंड गेट अ मोर्गेज, कि मैं क्रेडिट कार्ड पर कोई पैसे बारो करने नहीं चाहिए फॉर द मोर्गेज? So yes, not having credit cards can affect your application because banks need to trust you and to trust that you can pay on time. An example would be if you use your credit regularly and you pay on time, we suggest for you to take out credit and make the payments on time to increase your chance of getting your application approved. So what we suggest is you need to use the card for a minimum of 6 to 9 months before any application is considered. सो व्हाट यू सेइंग है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, तो आपको एक डायरेक्ट डेबिट सेट करनी चाहिए या पेमेंट सेट करनी चाहिए, ताकि ऑन द सेम डेट विदाउट गोइंग इनटू अरियर्स यू पे द क्रेडिट कार्ड, करेक्ट? Yes, that's correct. So what we say is set up your direct debit and pay off the amount in full. Okay, so here's my another question to you. देखो, आजकल जाओ ना स्टेट एजेंसी के पास, वो कहते हैं भाई हमें ऑफर चाहिए, बिफोर वी वांट एन ऑफर फ्रॉम द लेंडर बिफोर वी व्यू यू द प्रॉपर्टी। जब तक आप जब तक हमें लेंडर की ऑफर नहीं दिखाएंगे, हम आपको प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे, या हमें बताइए कि आपके पास क्या है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक बात है। तो लेकिन अब क्या हुआ है कि कई लोग जाते हैं ऑक्शन पर, बिकॉज ऑक्शन इज अ वे ऑफ गेटिंग अ चीपर प्रॉपर्टी, राइट? सो थोड़े ऑक्शन के रूल बताइएगा, क्या कैसे लोगों को, अगर किसने जाना है घर लेने के लिए या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए, या क्या कहते हैं बाय टू लेट लेने के लिए ऑक्शन पे, उनको क्या करना चाहिए? Okay, yeah. So there are two options. One is cash buy, and the other one is short-term finance. If you land into inheritance, either a wedding gift, it could be a gift from family or savings, you could buy the property in full. If you need to raise finance in a short period of time, there are options available. You could put down a deposit at auction, and we can help arrange short-term lending because normal loans may take longer than the auction timescale. So the best thing to do is if you give us a call, we could discuss this in more detail with you. सो मैं इफ आई कैन एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स, क्या होता है कि अगर ऑक्शन पर आप जाएंगे ना, तो क्या पहली चीज वो कहते हैं कि आपको 10% डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है? देन यू हैव टू कंप्लीट इन 30 डेज। अगर 30 डेज में नहीं कंप्लीट होते तो आपको 10 डेज एक्स्ट्रा देते हैं। कई कई लोगों के पास कैश होता है, पर उन लोगों को मैं उनके बारे में नहीं कर रहा। जिन लोगों को मोर्गेज चाहिए, तो क्या है कि शॉर्ट टर्म लैंडिंग होती है, उनको कहते हैं ब्रिजिंग। तो ये बट अगर आपको ब्रिजिंग के बारे में आपको कुछ चाहिए ना, कि कैसे आप ब्रिजिंग कर सकते हैं या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप अगेन ये जो नंबर है इसकी यूज कीजिएगा, 07534421 ये नंबर एक्चुअली आप लिख ही लीजिए। अगर आपको नहीं जरूरत, लेकिन कोई और जो आपको जानता है जो बाय टू लेट मोर्गेज लेता है, उसको क्या मालूम जरूरत पड़े, तो उसको ये नंबर दे दीजिएगा। मैं आपसे एक और बात कहता हूँ कि आजकल क्या है कि बाय टू लेट मोर्गेज क्या होता है कि लोगों ने
प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको रेंट दिया है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अभी उनके लिए वायबल नहीं है कि मोर्टगेज जो रेंट आ रहा है। हमें काफ़ी लोग जानते हैं जिनके खुद अपनी पॉकेट से पैसे डालते हैं कि मोर्टगेज देने के लिए। सो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ सरस जी, if somebody is in trouble with their mortgage for buy to let, whether it's buy to let mortgage or residential mortgage or commercial mortgage, right? Can you get them better interest rates if possible? Yes, you can get better. Well, you can. It all depends on your financial circumstances, and it all comes down to your income as well. And this is where we can come in and we can help you with that. And we can place it with the lenders we have on our panel. So my next question is this. Say I want to buy a buy-to-let mortgage. I want to buy a buy-to-let property, right? मेरे buy-to-let property में कितने is it still 30% deposit चाहिए? Yes, it's still 30%. 30% डिपॉजिट चाहिए, लेकिन मेरे पास 30% डिपॉजिट नहीं है। अगर मेरे पास एक और बाय टू लेट प्रॉपर्टी है या मेरा रेजिडेंशियल होम है या मेरे पास कुछ और प्रॉपर्टी है, मैं उससे कैन आई रेज मनी ऑन दैट? मैं उसके पैसे रेज कर सकता हूँ? Yes, you can. It depends on whether the lenders can see if you've got any existing assets, or depends on your financial circumstances, the affordability, and their criteria. But as we said, the lenders can look into the case for you, and we can place you with the right person and try and get you the best rates. just देखिए, ये जो मोर्गेज है ना, मोर्गेज मार्केट, इट्स लाइक अ जंगल। आप जब टीवी देखते होगे, बैंक्स आपको कह रहे हैं कि आओ हमारे से मोर्गेज लो, पर्सनल लो, ठीक है? सो आप जाते हैं, तो कहते पहले तो आपको तो कह देंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपको दे देंगे। लेकिन आप जब उनको अपना पेपर वर्क देते हैं तो वो कहते हैं नहीं भैया, आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक नहीं है, या आपकी इनकम ठीक नहीं है, या ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक, तो मोर्गेज को आपके लिए इनकार कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं? फिर आप मोर्गेज ब्रोकर के पास जाते हैं, वो भी आपको वही प्रॉमिस करते हैं, हाँ भाई फिक्र मत कीजिएगा, हम आपकी मोर्गेज ले देंगे, बाय टू लेट ले देंगे, कोई बात नहीं, मैंने इतनी लास्ट वीक इतनी की है, इतनी की है, इतनी की है। हाँ, अगर आपको मोर्गेज चाहिए, आप मुझे ना डिपॉजिट छोड़ जाएगा जो नॉन रिफंडेबल है। सो वो आपसे पैसे ले लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, ठीक है? सो मेरी एडवाइस पहले ये है कि बिफोर यू गो टू एनी ब्रोकर एनीथिंग, बिफोर आप उनको कोई पेनी भी देना, पैसे भी दे, उनसे पूछें कि क्या चांसेस है मेरी मोर्गेज लेने के लिए। अगर आप मुझे मोर्गेज नहीं लेकर देंगे तो मेरे पैसे का क्या होगा, ठीक है? अगर वो कहते हैं नहीं जी आपका पैसा गया है, मूव ऑन, राइट? अगर आपको पास कोई ब्रोकर नहीं मिलता या आपको पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर आप ब्रोकर ने पैसे दिए हैं, यू कैन मेक अ कंप्लेंट, स्पेशली ऑन रेजिडेंशियल मोर्गेज की जो रेजिडेंशियल मोर्गेज होती है ना, ये बड़ी कंप्लाइंट है। So you can make a complaint to the FCA to report your broker जिसने आपसे पैसे लिए हैं on false promise, कि आपको वादा किया कि आपके मोर्गेज मिल जाएगी, लेकिन ना उसने कोई काम किया है, 3 महीने के बाद आपने पैसे लूज कर दिए, वो आपको पैसे नहीं वापस करना चाहता। अगेन, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप हमें फोन कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कैसी किसको रिपोर्ट करना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए। एंड एक और मैं आपसे बात पूछूंगा कि people of my age, sirs, right? And I'm not that old. Okay. Now, does age matter? अगर किसी के पास mortgage चाहिए कि if I want to come down, you know what? From a bigger house, want to buy a smaller house, right? I still have to apply for a mortgage, right? So tell me about the age. What's the criteria for mortgages with older people? So, first of all, there are lenders who can lend you up to even the age of 80 or 85. You must be the minimum age of 18 or 21 if you are buying a rental property. It's not just your age they consider. They also consider other factors, which can be from your income to your circumstances. If you have any assets or any savings, they'll consider every single option for the application. And they do this or they don't do this?
high street banks. If I went Yeah. to say a high street bank and I said, well, look, you know what? I'm over a certain age. I need a mortgage, right? Is there a specialist bank that does this, or is it high street bank do this, or do you have to go to a specialist lender? Again, it all depends on your circumstances, but we do have specialist lenders who can deal with this as well. Because if the high street bank won't accept you, there are other options available as well. Okay, well, let me put my next question to you. लेकिन उसे करने से पहले मैं एक फिर कहना चाहता हूँ. देखिए, age should not be a barrier to you getting a mortgage. Okay, just remember that, right? अगर आपको किसी ने बताया कि आप 65 है या 70 है, आपको mortgage नहीं मिलेगी, it's not correct, right? You can get a mortgage, and you can get a mortgage the right rate, right? And not just residential, you can buy to let mortgages. Buy to let mortgages, देखिए अगर आपके पास accountant है या कोई है वो आपको बता देंगे कि you need to get your buy to let mortgages on a company name because it's more tax efficient. आप जो आपके accountant है, he can give you better advice than we can. But it's a good idea to have a look at your portfolio. देखो कितनी properties है, कितनी है, कितनी नहीं है. अगर आपके पास, if you have a number of properties and आप उनको चाहते हैं कि हाँ ये मैंने बच्चों के लिए रखी है, लेकिन if I transfer these to my kids, मुझे स्टैम्प ड्यूटी दोबारा देनी पड़ेगी या टैक्सेशन दोबारा पड़ेगी. सबसे अच्छा आइडिया उसमें एक ट्रस्ट फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? सो ये ट्रस्ट का भी स्पीक करने के लिए इस प्रोग्राम में तो टाइम नहीं है, लेकिन वी विल स्पीक अबाउट ट्रस्ट अगेन. सो लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आपको ट्रस्ट के बारे में आपको एडवाइस चाहिए, जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर फ़ोन कीजिएगा 07534 या जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाएगा, एक मैसेज छोड़ देगा, ठीक है? हम आपके सब कॉल्स आंसर करेंगे और जो हमारी कंसल्टेशन है ये सब फ्री है. देयर इज नथिंग, देयर इज नो चार्ज. तभी हम ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया है ताकि हम आपको एडवाइस कर सकें आप कैसे पिटफॉल में ना बने. अगर आपकी प्रॉपर्टी है कि आप यू आर लेट विद योर पेमेंट्स, क्या है कि बैंक ने आपको लेटर लिख दिया है, दे आर ट्राइंग टू रीपोजेस योर प्रॉपर्टी, डेफिनेटली ये नंबर रिंग कीजिएगा बिकॉज हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी आप कैसे सेव कर सकते हैं. देखिए इतना इजी नहीं है कि कोई आके आपकी प्रॉपर्टी ले जाए. आपने हार्ड वर्क किया है, आपने डिपॉजिट दिया है, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आपकी जॉब में निकल गए हो या बिजनेस में है वो फेल हो गया है, you can go to the court and have courts protection for a period until आपके सिस्टम ठीक हो जाता है, आपका काम चल जाता है, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है या आपको काम मिल जाता है. अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ों में एडवाइस लीजिएगा और प्रॉपर एडवाइस लीजिएगा. देखिए आप यू कैन गो टू स्टेप चेंज, यू कैन गो टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस एंड दे गिव यू गुड एडवाइस, राइट? एंड टेक एडवाइस फ्रॉम स्टेप चेंज. गवर्नमेंट बॉडी है, आपको अच्छी एडवाइस देगी इसके बारे में. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमसे बात करनी है तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा 07534321945 एंड हम आपको पूरे सीधे रास्ते पे रखेंगे. कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है. सिर्फ यही चाहते हैं कि आप अपना घर सेव कर सकें, आप अपने साथ रह सकें, आपको खुशी से रह सकें, क्योंकि आजकल टाइम्स आर नॉट इजी. आप सुपरमार्केट में जाते हैं, अगर आपने कुछ चीज़ 10 पैसे के लिए वो आज 30-40 पैसे हो जाती है. बड़ी महंगाई बहुत है, इसलिए आपको जहां भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जहां भी आपको एडवाइस कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस देंगे. ये प्रोग्राम मोर्टगेज के बारे में है क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों की फ़ोन कॉल आती हैं कि हम अरियर्स में हैं, हमारे बैंक से बात करो, ये हमारे लिए ये कर सकते हैं या कोर्ट में जाओ. मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ ऐसी प्रॉब्लम आपके पास कोई हो आप हमें फ़ोन कीजिएगा. अच्छा सरस, you know, I want to buy a mortgage, right? So I'm a certain age, right? So can I get my family members on application? So I can obviously get my wife on the application, right? But कैसे अपनी लड़का या लड़की या बहू किसका नाम लिख सकता हूँ अगर मुझे mortgage चाहिए? Yes. So the more people you add on the application, the better rate and loan you can get. Lenders can consider up to 4 people, and they will also consider all of their financial circumstances, including affordability, income, and all credit checks. Okay.
So let's change the subject just slightly, right? Meri job chale gayi hai. I want to set up my own business, whether it's a hairdresser, a coffee shop, or a tea shop or a confectionery shop, right? मैं ये अपने आप के मुझे मेरे लिए प्रॉपर चाहिए कमर्शियल मोर्गेज चाहिए ठीक है हाउ कैन यू हेल्प मी इन obtaining a commercial mortgage right क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है so how can you guide me so I get a good not only get a good rate for a commercial mortgage but best advice for commercial. Okay, so the best thing to do is we have a team in the office that can help you get on the property ladder. We can set up your business, we can arrange a bank account, arrange a business plan, and we can arrange for you to get the right advice in terms of the tax benefits, in terms of taxation and everything else in regards to those properties. So this is, but this is fine, Saras. What I want to ask you, yes, everything costs money. Okay, you can advise us free of whatever, right? But if you haven't got it, if you're setting out, you're having tough times, right? You want to go, देखो, as you said earlier, for a commercial mortgage, you need 30% deposit. Is that correct? Yeah. But you have to make sure that that 30% is not wasted because there's no point taking a mortgage and paying 30% deposit if you're paying 10, 11, 12% interest, right? Mm. So how can you go to a lender? How can you apply to multiple lenders for a commercial mortgage, or do you have to go one by one? We can go to multiple lenders. We can make all our inquiries, and then we will tailor to what how you fit the criteria for the lenders. Okay, so let's ask a very simple question now. So there are people watching इनके पास buy to let properties हैं. They've not got. They may have one, they may have two, they may have 10, they may have 12, right? In this marketplace, right? Is it still worth investing in buy to let properties considering that the interest rates are high? Yeah. So, and we will have the people buying these properties will have to have rent to match minimum, the amount of monthly income going out. But obviously, they bought it to make money, right? Is it still worth it for them to go into the buy-to-let market? Of course, and it's the way we see it is that you can get passive income from renting out a property, and you will gain tax benefits. So what we suggest for you to do is talk to your accountant or financial advisor, whoever, in terms of what is right for you, and take a course of action. Even if you have a very good property portfolio already and you want to release equity, yes, lenders will consider your application depending on what it is you have on your portfolio. Okay, sir, देखो हमारा टाइम खत्म हो रहा है कि time flies, right? So मेरा last question ये है, and can you help me arrange finance even if I'm employed or have my own business? I should say if I'm self-employed. Yeah. Yes. So Yeah. how? So if you're self-employed or you have your own business, yes, we can arrange finance. What the lenders will request is your SA 302s, your tax year overviews, and your management accounts. They will need to see your business bank statements, even if, let's say, you start self-employment or you just started a business. Some lenders will even consider 1 year's accounts to get you the rate. But the more you can supply, the more lenders we can approach to get you the best rate. तो देखिए भाई साहब बहनें जो आप देख रहे शो, अगर आपको कोई हमारा शो का टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके पास कोई क्वेश्चन है 07534321945 पर फोन कीजिएगा या वेबसाइट पर जाइएगा और हम आपको अगले वेडनेसडे मिलेंगे विद अ डिफरेंट टॉपिक. So thank you for watching, really appreciate it, and we are glad that we are back. Thank you and good night.